अ, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम मुर्गेश है। मैं हमसफर ट्रस्ट में डायरेक्टर प्रोग्राम्स के रूप में काम करता हूँ। मैं आज सबको तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, कलीग्स, पैनलिस्ट जो हैं और जो कमिटी मेंबर्स जो अक्रॉस इंडिया आज इस वेबिनार से जुड़े हैं, मैं सबको आज बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज के दिन हम सब थोड़ी देर के लिए एक दिन पे रुक जाते हैं और हम फ्रेंड्स जो इस बीमारी से गुजर चुके हैं और जो फ्रेंड्स जो इस बीमारी के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके एक ऑनर करते हैं, सल्यूट करते हैं, उनको रिमेम्बर करते हैं कि हमको ये जो एपिडेमिक है, जिन्होंने अपनी जान खोई है, उसके बारे में हम उनके बारे में थोड़ा सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो भी डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, फैटर्निटी है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमने पिछले साल क्या किया है और हम आगे आने वाला साल में हम क्या करेंगे इस एपिडेमिक को रोकने के लिए, इस एपिडेमिक को खत्म करने के लिए। जैसे आप जानते हैं, हमसफर ट्रस्ट 1994 से शुरुआत किया था हमने। बेसिकली हेल्थ और ह्यूमन राइट्स ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर हमारा ये काम चालू है। और शुरुआत तो हमने खैर कॉन्डम बांटने से, अवेयरनेस, प्रिवेंशन से की, पर अब धीरे धीरे हमारा काम बढ़ रहा है। हम रिसर्च में हैं, हमारा अपना एक लिंक एआरटी सेंटर है। हमने अब हाल ही में सबको पता है कि पूरा देश, दुनिया कोविड से गुजर रहा है, तो हमने काफी सारे कोविड रिलीफ कैंपेन्स किए हैं, एक्टिविटीज किए हैं और एक समझ कैंपेन भी किया है, जो आप आने वाले पैनल में आप देखोगे। तो इस बार का आप देखोगे कि जो हमारा थीम जो इस बार यूएन और देश में जो हमारा थीम है, वो है ग्लोबल सॉलिडरिटी, यानी हम सब विश्व को एक साथ लाना है या विश्व में एकजुटता लानी है और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हमको अपनी सामूहिक जिम्मेदारी लानी है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे आप देखोगे, कोविड जैसे एक वायरस जिसने ना पूरा दुनिया को जिसने हिला के रखा है, सेम उसी तरह जब एचआईवी की शुरुआत हुई थी, सेम इश्यूज थे, सेम स्टिग्मा, सेम डिस्क्रिमिनेशन, वायरस पे कोई बीमारी नहीं का इलाज नहीं मिल रहा था, बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो आज हम देखते हैं कि आज के दिन में जो हम ये ड्रॉप इन सेंटर में इवेंट्स करते थे, आज हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है हमको देखने के लिए, समझने के लिए कि किस तरह हम ये डुअल एपिडेमिक जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको जैसे कोविड भी है और एचआईवी भी है, इसको हम किस तरह एक साथ लड़ सकते हैं और इसके स्टिग्मा को लेकर, इसके ट्रीटमेंट को लेकर हम कैसे लड़ सकते हैं, स्पेशली अमंग एलजीबीटी कम्युनिटीज, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज कहूंगा मैं, बिकॉज आप जैसे जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बोलो या फिर जो हाइजीनिक मेजर्स बोलो, ये जो ट्रांसजेंडर्स हमारी बहनें हैं जो समुदाय में रहते हैं, उनको शायद ये होना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी एक रियलिटी है। तो हमको आज रुक कर देखना है कि हमको एचआईवी के साथ ही नहीं, पर हम एचआईवी कोविड के साथ ही नहीं, एचआईवी के साथ भी हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो देखना यह है कि हमने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छे तरीके से हमारा रूट चल रहा था, पर कोविड के बाद हम थोड़ा रुक गए हैं और हम थोड़े पीछे भी जा चुके हैं। तो हमको देखना है कि इस वर्ल्ड एज डे में इस थीम को लेकर हम किस तरह ग्लोबली, लोकली सोचेंगे और देखेंगे कि हम पहले जैसे कैसे होए, हमारा सर्विसेज को किस तरह स्ट्रेंथन करें और इसको आगे लेके बढ़ाए। बिकॉज हमको अभी सब जानते हैं कि सिर्फ एचआईवी एपिडेमिक नहीं, हमको कोविड एपिडेमिक के साथ भी काम करना है। तो हम सबको बहुत स्ट्रांग रहना है, रेजिलिएंट होना है और हिम्मत रखनी है कि हम इस दोनों वायरस से लड़े। आप अभी देख रहे हो कि बहुत सारे वायरसेस की हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो टेस्टिंग कम हुआ है, लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, टेस्टिंग नहीं ले पा रहे हैं, अपने ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं। तो कोविड ने हमारी जिंदगी को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो आज हम एक ग्लोबल सॉलिडरिटी के साथ और हम अपने भी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम इसको किस तरह आगे लेके जाएंगे, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे हम। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ सभी को, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अल्पना मैम से इसको आगे लेके जाए। बट वी ऑल नीड टू बी टुगेदर in this global fight against HIV and COVID-19. Thank you so much for this opportunity, and over to you, Alpna. Thank you. Thank you so much. So for Ali and Karen, I'll just translate this little bit what Murgesh spoke. So this year's theme is global solidarity and shared responsibility. And India has played a very, very important role in actually contributing to the global solidarity and shared responsibility, because
India is the nursery of generic ART drugs in the world, and a majority of the world is getting generic medicine from India. So we have a lot of responsibility on our shoulders to make sure that not just us, our people, but the rest of the world also stays healthy. And the same hopes we are pinning towards COVID, because we had made substantial gains in last 21 years, and because of unfortunate turn of events due to this pandemic, those gains have been reversed. There is almost around 75% drops in pickup of ART services, and even testing, people are not getting adequately tested. So it has been really, really challenging, and Humsafar Trust has tried at its level best to be out there for the community. And community is definitely a very resilient community, and that's what this morning when I was attending World AIDS Day's webinar from the National AIDS Control Organization, that's when I heard a lot of people, such as the UNAIDS country director, Dr. Bilali, Dr. Rodrigo from WHO, our minister, our DG NACO, Ms. Aarti Ahuja. All of them were lauding community for their efforts. In fact, for Ali and Karen, I'd like to share here that when the world had come to a standstill, there was some people who were working non-stop, people who are living with HIV/AIDS, who have organized, collectivized themselves. You will not believe, Indian Post actually couriered ART medicines to people, where they were, because they were not able to reach. This was a special thing that Indian Post did, and we are so grateful. मैं यहाँ सबको बताना चाहूंगी कि हमें ये पता चला है कि कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने, सभी महकमों ने इतनी मदद की है कि एआरटी की दवाई भी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। खैर, उसके बारे में गणेश तो अच्छे से बताएंगे, तो मैं वो ज्यादा समय लूंगी नहीं, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम आपको एक फिल्म दिखाएंगे। अक्सर कम्युनिटी की शिकायत होती है कि ये जो फिल्म्स बनती हैं वो सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को दिखा के और एचआईवी की रिस्क असेस करने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारी हमारी तरफ से, हमारी तरह बात करने वाले, सोचने वाले फिल्म्स तो हमें मिलते नहीं हैं। तो आज आपको एक ऐसी फिल्म दिखाएंगे जिसके बाद आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। सो वी आर गोइंग टू शो अ मूवी which has been supported by MTV Staying Alive. That is one. And second thing is, we have this wonderful panel here. I'll introduce the panel later after the movie, and we'll have discussion. हम एक चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हर इंसान अपने अपने तरीके से कोविड, HIV और LGBT समुदाय को लेकर किस तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा है। May I now request Dinesh to show the movie? The movie is रोको सोचो, और इसे डायरेक्ट किया है प्रदीप्ता ने। Can you increase the volume, Dinesh? Can everyone hear the volume? No, it's not audible at my end. It's not audible, yeah. Not at all. Is it audible? No? Just fix this, please. Please stand by, थोड़ा समय दीजिए।
दिनेश, ये मूवी हम चैनल पे भी रखेंगे ना इसके बाद? यस मैम। हाँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी हम मूवी देख लेते हैं और फिर हम हमारे चैनल पे भी लोग देख सकते हैं विद डायलॉग्स. Okay, or else what we can do is we can start with the discussion and we can show movie later. Okay, I think I'm going to do that. Dinesh, you see how you can fix this. If you can get in another format, till then I think I'll proceed with the discussion. Okay, so a little bit of change in the event. So okay, so अभी हम लोग एक पैनल डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको मैं सारे पैनलिस्ट को उससे परिचय कराना चाहूंगी. हमारे साथ हैं डॉक्टर चित्रा नायक. डॉक्टर चित्रा नायक कैन गिव अ वेव. ओके, डॉक्टर चित्रा नायक जो है मेडिकल प्रोफेशन में पिछले 30 साल से हैं और एडजंक्ट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज और एडजंक्ट प्रोफेसर है इसमें बेसिकली BYL Nair Hospital, and she is also member secretary of the institutional ethics committee. She's also the president of IADVL Maharashtra branch. She's also a member of Humsafar Trust institutional review board. She is a clinician with vast experience. अगर आपको किसी तरह की जानकारी त्वचा गुप्त रोग और HIV से संबंधित कोई जानकारी कोई डाउट हो तो इस पैनल के बाद आप डॉक्टर चित्रा से भी सवाल पूछ सकते हैं. Then we have with us Mr. Ali Khan Rajani from the Canadian High Commission. Welcome, Mr. Rajani. And he is the counselor and head of advocacy and public affairs High Commission of Canada to India. And he has got tremendous experience all over the world. Some of the countries are Jordan, Lebanon, Egypt, India, Pakistan, Nepal, Indonesia, East Timor, and Afghanistan. He's worked in UN Habitat, CARE, Government of Canada. He's done work in CEDA, and welcome. It's amazing, your kind of experience. Then we have with us Karen, our very own Karen, whom we have known for a few years. Welcome back, Karen. Last year we missed you. Were you there? Or last year? 1 year? I think it was last year, or I had to go for a wedding. Yes, see, we remember that. So, Karen जो है ये ब्रांड मैनेजर है मैक कॉस्मेटिक्स इंडिया की और ये पिछले 14 साल से मैक में काम कर रही हैं. उसमें से 11 साल से वो मुंबई में है, मुंबई कर है. सो दैट इज कैरन थॉमस फॉर यू. वेलकम कैरन. फिर हैं हमारे अपने गणेश आचार्य. यस गणेश, सो हैप्पी टू सी यू हियर. गणेश हमारे हैं एक सर्वाइवर, एक योद्धा. ही इज अ फाइटर. ही इज HIV ट्यूबरकुलोसिस सर्वाइवर. ही इज HIV TB activist. And he has been thriving for last 20 years. I won't say survivor, I will say thriver, because that's who he is. Incidentally, he is also our new member secretary for the institutional review board, Chitra ma'am. So yeah, so and he's a peer, he's a counselor, he's in charge of the Link ART Center, and he's also worked in medicine, so MSF. And he's also an advocacy officer. So welcome, Ganesh. Then we have with us our very own Suhail Abbasi. Suhail Abbasi is the co-founder of Humsafar Trust and our chairperson. He is an experienced media professional with, I don't know how many years, 35 years of experience across print, films, and television and digital platforms. He is also a co-founder of Bombay Dost. It's India's much coveted first registered LGBTQ plus magazine. And he's also a mentor to the budding journalists and filmmakers through LICO Citizen Journalism Workshop Media Fellowship programs. Suhail also works as a proud and out independent media professional. He has propagated diversity and inclusion among corporates. You have to see his movie called Cover Story, which highlights the way to deal with your sexuality at workplace. So welcome, Suhail. And
with this wonderful panel. We are looking forward to have a great discussion. इस इन सारे महानुभावों के साथ एक अच्छे चर्चा की हम उम्मीद कर रहे हैं। और मेरा सबसे पहले सवाल है गणेश आपसे, क्या हुआ ये कोविड की पैंडेमिक में हमारी कम्युनिटी के साथ? जो कम्युनिटी HIV से, TB से संघर्ष कर रही थी, क्या हुआ इस कम्युनिटी का? किस तरीके से समस्याएं आई और लोगों ने कैसे उसका निदान किया? थैंक यू अल्पना मैम। आई थिंक ये जो सिचुएशन है तो हमने कभी देखा नहीं पूरी जिंदगी में। तो मैं थोड़ी सी, मेरे बारे में आपने बता ही दिया, तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जब मैं एडोलेसेंट था, टीनेजर था, तो तभी मैं स्कूल ड्रॉप आउट था। आई एम होमोसेक्सुअल, आई एम नॉट कम आउट इन होम। मेरे लिए 98-99 की पीरियड में HIV को लेकर फैमिली में स्टिग्मा, तो वहाँ से आइसोलेशन, तो ये आइसोलेशन वर्ड हम तभी से सीख चुके हैं। So then I twice diagnosed with tuberculosis and homeless. So I'm proudly say I struggle a lot. So I can stand here to share my community, my one way, to how we together. और इस साल का जो थीम है जो ग्लोबल सॉलिडारिटी, तो जब अचानक से पैंडेमिक मालूम पड़ा कोविड, तो ये हमारे लिए बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन थे। हम HIV के फील्ड में बहुत साल से काम कर रहे हैं, सदियों से, मतलब डिकेड एंड डिकेड। और TB तो 100 साल से ही TB के में काम चालू ही है। तो जब हम HIV के फील्ड में काम कर रहे थे, हमने कम्युनिटी को साथ में लेके ही एक बहुत अच्छा पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस किया है। तो कोविड जब आया तो हमने कम्युनिटी पूरा आइसोलेशन ही हो गया, टोटली आइसोलेट। अभी यहाँ पे आइसोलेशन में मैं एक बात को रखना चाहता हूँ कि देयर इज वन टर्म लाइक इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। तो ये जो इसेंशियल वर्ड है, तो कोविड के टाइम में लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या चीजें इसेंशियल में है, क्या चीजें इसेंशियल नहीं है। तो सबसे पहले ART ट्रीटमेंट। तो आप देख सकते हैं कि एपिडेमिक इतने सालों से, मोर देन आई थिंक 35-40 इयर्स, तो इतने सालों से हम जब लड़ते आ रहे हैं, तो अचानक से हम उसमें टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और कम्युनिटी को घर के अंदर एकदम टोटली बंद रहना, तो एक हमारे लिए एक अचानक से एक ये था, नाइटमेयर जैसा ही था। तो लेकिन कम्युनिटी साथ में थी, हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन हमें ये इंश्योर कराना था कि हमारी ट्रीटमेंट 100% हम तक पहुंचना चाहिए। वी हैव टू इंश्योर दैट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी शुड बी नॉट डिस्टर्ब बाय द पैंडेमिक। तो बहुत सारे लोग घर से निकलने के लिए, मैं थोड़ा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि टोटल लॉकडाउन था, आप इसेंशियल है तो ही घर से निकल सकते हैं। तो हमारे लिए ये था कि सबसे पहले पुलिस के बैरिकेड में हम क्या बताएंगे, लोकल HIV में स्टिग्मा, कोविड में तो अभी बहुत सारे लोगों को स्टिग्मा, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये सारे टर्म्स अभी पूरा जनरलाइज हो गया है। लेकिन HIV फील्ड में हम लोग स्टिग्मा और ऑलरेडी इतना वल्नरेबल है, हम इतने सालों से झेल रहे हैं, तो हम एक बैरिकेड तोड़ के हम कैसे ART सेंटर तक पहुंचे, या हमें कुछ इन्फेक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेक्सुअली ट्रांसमिशन इन्फेक्शन हुआ है तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन है, बाजू में कोई मेरे नियर बाय कोई प्राइवेट डॉक्टर, वो भी शट है, तो वो भी पूरी तरह शट डाउन था। तो हम करें तो क्या करें? तो मेडिकल साइंस में कभी वर्चुअली भी कुछ चीजें, जैसे कि कभी ऐसे ये एथिकली भी नहीं किया गया था कि वर्चुअल कंसल्टेंट होना चाहिए, टेलीमेडिसिन का टर्म था। लेकिन कोविड के टाइम में आके बहुत सारी चीजें कम्युनिटी को भी सीखने मिला, फिर पब्लिक हेल्थ को भी सीखने मिला, और कम्युनिटी ने घर के अंदर लॉक होके कि ART को कैसे
पूरी तरह लेना चाहिए। तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि जैसे मुंबई सिटी बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे कंटेनमेंट जोन थे। तो हमारे पास में जैसे लॉकडाउन हो गया, हमारे एक मेंबर्स को, तो जो सपोर्ट ग्रुप में रेगुलर आते थे, तो उनको लिम्फ नोड हो गया अचानक से। तो अभी लिम्फ नोड हो गया और हाई फीवर है, तो वो हॉस्पिटल, जैसे वो परेल में रहते हैं, तो उनके सामने सिर्फ केएम में जा सकते हैं, वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है। तो हमने फिर मेंबर्स और एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए कम्युनिटी, क्या हमने सोल्यूशन किया, एटलीस्ट हम सिक्योरिटी गार्ड तक तो हम कन्विंस करें, या पुलिस को कन्विंस करें, या हम फिर वहाँ पे एक इशू ये था कि अगर आप सर्जरी डिपार्टमेंट, देखिए तभी सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट हमारे, एक तो फीवर का ओपीडी चालू था, या तो एआरटी सेंटर चालू थे। लेकिन आप बाकी सारे ओपीडी ऑलमोस्ट बंद ही थे। तो हमने फिर सर्जरी डिपार्टमेंट को एटलीस्ट हमने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज इनको रुका नहीं सकते हैं, और ये इनके साथ में कोई आ भी नहीं सकता है अंदर। तो वहाँ पे ऐसा सिचुएशन था कि हम इतना हाई फीवर है, साथ में रिलेटिव भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकते हैं। अभी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत एज ए पेशेंट अब सुबह से शाम तक सर्जरी करना है, लिम्फ नोड से फ्लूइड्स निकालना है, तो उनके साथ में कोई रहना चाहिए। तो लेकिन हम एज ए फोन, व्हाट्सएप, हम उनके साथ में टच में थे। आप बैठिए, पानी पीजिए, आपने सुबह नाश्ता किया है ना, आपको कुछ नहीं होगा। एक एक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको कल परसों रिजल्ट आने के बाद में ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो इस तरह हमने कलेक्टिवली पेशेंट के साथ में, पर्सन के साथ में हमने इमोशनली टच में रहे। तो कुछ कुछ लोगों का एआरटी घर तक भी, डोर टू डोर भी लेके कम्युनिटी ने पहुंचाई है, जो सिस्टम के साथ मिलके। तो वो भी एक बहुत अच्छी इनपुट्स है कम्युनिटी की तरफ से। और कुछ 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 चीजें नई चीज भी हुई है, जैसे कि आई वुड लाइक टू थैंक टू गवर्नमेंट ऑल्सो कि उन्होंने मल्टी मंथ डिस्पेंसरी, जैसे कि हम हमेशा एआरटी ट्रीटमेंट में 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना ट्रीटमेंट हम मेडिसिन हम रिसीव करते हैं। तो कोविड के सिचुएशन में आई थिंक एचआईवी प्रोग्राम में मल्टी मंथ डिस्पेंसरी बहुत सारे लोगों तक मिला था। और दूसरा ये भी फायदा हुआ था कि घर के नजीक जहाँ पे सेंटर है, आप अपने ग्रीन कार्ड का व्हाट्सएप दिखा के भी आप निकाल सकते हैं वहाँ पे मेडिसिन। तो ये बहुत इजी था हमारे लिए, और थैंक टू नाको टू सर्कुलेट दैट एडवाइजरी टू देम। टीबी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि टीबी पेशेंट के लिए कुछ कुछ लोग इंजेक्टेबल थे, डेली इंजेक्टेबल, तो उनके लिए एक नर्स ढूंढना, या हॉस्पिटल बंद थे, तो हम कम्युनिटी लेवल पे हमने कंपाउंडर ढूंढ के उनको दिया है। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आल्सो हाउ टू टैकल दैट। कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है, और हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमने एचआईवी के साथ, वायरस के साथ जी रहे, और जिंदगी भर जीने वाले हैं। और टीबी के बैक्टीरिया को हम लड़ चुके हैं, और लड़ेंगे, और कोविड को भी हम लड़ेंगे, और हम कम्युनिटी के साथ में साथ रह के एक यूनिटी बना के लड़ेंगे। थैंक यू। That was so inspiring. And Karen, I will translate this for you because I do not want you to miss out on what Ganesh has shared. So, so Ganesh has shared his personal story that he is a tuberculosis survivor, and from a very young age, in a situation where he didn't know, everything about TB or HIV. That's where it kind of struck him, and he was a minor that time. And so he has survived this HIV from a very, very young age. And he said that the kind of stigma that he has himself experienced, he has experienced stigma, discrimination, and homelessness. He said that, we realize that every now and then with a new epidemic coming, a community has to go through it all over again. And especially not being able to share your health condition is one of the biggest challenges. So he said that essential and non-essential services, what is essential and what non-essential in the division that was done, how would community actually go and cross that police barricade and tell them that they need to go for ART medication, because there's so much of internalized stigma and fear about being discriminated or even to out their status. So
people, community members didn't know. In fact, so what they took it upon themselves was to go up to that one person, one guard, one person at the hospital door to say that, look, we are positive and we need to go and get this medicine like right now. It is an urgency. So it requires tremendous amount of courage on the part of the community members. So Ganesh was also giving example of someone who was having an opportunistic infection and was very high on fever. But the dilemma was that this person could have only gone to the next door hospital, which was a government hospital, and could not have taken anyone accompanying him. So what they did was they kept in touch via phone, via WhatsApp, and gave that, support, saying drink water, sit down, relax, have your breakfast. He also gave the example that, there were people who were on injectables for tuberculosis drugs, and you had to find a compounder, like an allied medical personnel to inject, and they managed to find that also. And they Ganesh has also thanked the government, because government actually ensured that you could have multi-month dispensary, meaning that you could take more than 2 to 4 months of drugs at the same time, so that people do not fall off the ART medication, which is absolutely important. And I think it's amazing what all work has happened at the ground level, and thanks to the power of people like Ganesh. I will now move on to Suhail. I'd like you to talk about how did हमसफर recalibrated itself. हमसफर ने अपने आप को कोविड की सिचुएशन में किस तरह से एडजस्ट किया, और जिस समुदाय को वो सालों से मदद कर रहे हैं, जिनके साथ खड़े हैं, उन तक कैसे वो पहुंचे. और अगर आप हिंदी और इंग्लिश में वाकया कर पाए तो बहुत बयान कर पाए तो बहुत अच्छा होगा. Thank you for having me here. I would like to go back. We started Humsafar Trust in 1994, about 26 years ago, and we have been offering health services to the LGBT community ever since. We have a doctor who sits in our center from 12 in the afternoon till 8 in the night, and we provide a lot of regular mental health counseling and medicine for other ailments, and we also do the HIV testing and STI testing. So far so good. But when we all woke up in 2020 March, towards the end, we woke up in a different world. एक ऐसी दुनिया जहां इतना ज्यादा इग्नोरेंस था, इतना ज्यादा डिस्पेयर था, इतनी डार्कनेस थी, और किसी को कुछ पता नहीं था. हर दिन एक नई थियरी उजागर होती थी कि मास्क पहना जाए, उससे आप बच सकते हैं. फिर पता चला नहीं, सिर्फ हाथ धोने से काम चलेगा. फिर ये हुआ कि नहीं, N95 मास्क पहनना चाहिए. फिर पता चला नहीं, वो N95 मास्क तो सिर्फ हेल्थ काउंसलर्स के लिए है. तो बेसिकली हर दिन एक नया मुद्दा सामने आता था, एक नया पहलू सामने आता था कि किस तरह से आप कोविड से बचे. कोविड एक ऐसा हवा बन के आया था और पूरी दुनिया पे उसने काबू पा लिया था. वो सबको हिला के रख दिया था, सारे सिस्टम्स को. तो ऑब्वियसली LGBT कम्युनिटी भी उसी का हिस्सा थी. और हम लोगों ने रियलाइज किया कि हम HIV की तरफ से तो लोगों तक पहुंचते हैं, काउंसलिंग भी होती है, लेकिन अब कोविड का क्या करें. पैटर्न हमारा ये रहा है कि आपका क्लिनिक है, लोग आपके क्लिनिक तक आते हैं, आपसे हेल्थ केयर सर्विसेज लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, चले जाते हैं. कोविड एक नया हुआ था. इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉन्स्टर ऑल टुगेदर. And Humsafar actually had never done any kind of relief work, but we realized that it's high time we need to jump into it, because our brothers and sisters from the community were getting very adversely affected. Their livelihood was in question. They had no employment. People were going hungry. Their day-to-day existence was becoming painful. They had nowhere to go to. And we decided to set up a relief fund. For the first time, Humsafar set up a relief fund called Humsafar Fights COVID. And we reached out to people who needed help through our unstructured community networks and structured community networks. And we also reached out to all our families, friends, allies, corporates, and asked them for donation. And the time was bad. People were going through financial crisis, people were going through mental health crisis, but touch wood, we were so fortunate
that a lot of our friends came forward, and something which was started on a temporary basis, we thought we'll try it out for 3 to 6 months. But I'm very happy to share with you that till now, since March, we were able to collect about 1.3 crores, and we reached out to more than 10,000 people over 22 states, which is highly commendable. And we reached out to them with medicine, with ration, with even cash in certain areas for whoever wanted it. And we tried our best, and our teams were so outgoing, so rather adventurous that they put their own lives at risk, and they reached out to people. You know, in times of COVID, they came to the center, they would sit all night, make ration packets, reach out with essential medicines to people. It was highly commendable that our teams rose to the occasion and conducted this relief work with absolutely like clockwork precision. So I'm very happy to share that with you. And beyond friends, we also had a lot of high commissions, a lot of consulates who contributed to that fund. So I thank all of them. A lot of corporates came forward voluntarily and donated money for the cause. So I'm really happy that everybody helped out Humsafar Trust to reach out to the LGBT community in times of COVID. Thank you. Thank you, Suhail. I'd like to now ask Dr. Chitra. मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आप एक हॉस्पिटल सेटअप में हैं और जब ये समस्या शुरू हुई थी मार्च में और सब यही सोच रहे थे कि इतनी जनसंख्या है हमारे देश की, हमारे हॉस्पिटल्स अपने आप को कैसे तैयार करेंगे. So we really like to hear from you, how did our systems actually gear up to tackle with the challenge of COVID, and also your subject specialization. As per that, how was the management of STI or HIV was done during this period? In terms of tackling COVID, I must say the overall health administration has played a pretty took it in their stride, and right from March, a lot of jumbo COVIDs were planned and on a war footing. So you must be aware in Mumbai, at least I can talk only about Mumbai since I'm from Mumbai. At BKC, of course, the first jumbo COVID was started as the NSCI, the Dome, it was like a private-public partnership. Dr. Mufazzal Lakdawala, you must have heard of his initiative in starting. And it became like a model for starting all the other jumbo COVIDs. And, there was provision made for at least 1,000 patients at BKC, 1,000 patients at Dahisar, more than 1,000 patients at Goregaon, and also in the eastern suburbs at Mulund. And I think by June end, all COVIDs were functional. So within 2 months, the first one at BKC became functional, and slowly one after the other, all of them by July, at least all of them had become functional. And of course, so there was medication provided for COVID. As far as ART provision goes, I think MDAX, the director, program director, Dr. Acharya, she made it a point to see that, patients couldn't travel and come. So they were contacted, they were told the nearest ART center where they could reach and they would get their medication. So a lot of care was taken. So one was COVID was handled. Unfortunately about COVID, I would like to say the beginning, maybe from the way it was handled in the media by the government, there was a lot of fear created. So a lot of people, what we realized in the beginning, they would not want to be tested, not want to be diagnosed as COVID, because unfortunately what was seen is how the families were taken away for quarantine, and all those kind of things gave it a little bit of negativity. But other than that, I must say that the management of the COVID patients themselves was really well done.
even so many oxygen facilities were started in absolutely non-hospital kind of like schools, certain vacant buildings. They started a lot of oxygen facilities so that patients who needed the oxygen could be there, who were not very bad but who needed a little bit of oxygen to keep the saturation going. But when ART also was handled, I think, reasonably well. Very few patients actually were unable to get their ART, but a large number of them, they were given contacts of the nearest ART center. Unfortunately, I cannot say the same about STI services because they did shut down. For example, I work at Nair Hospital. Nair was declared a completely COVID hospital. So they shut down all our OPDs and they put all of us into COVID duties, various kinds of COVID duties. But I think so. There were very few places left for people with STIs to approach, and I think that was one thing which was not very well handled, was not foreseen and taken care of. So I think by and large, this was how the whole system was, the whole pandemic issue was handled. So यहाँ पे हमारे सदस्यों को बताना चाहूँगी, डॉक्टर चित्रा नायक ने बताया कि जैसे इस महामारी की जब शुरुआत हुई थी तो लोगों में काफी डर हो गया था और लक्षण आने के बाद भी लोग जांच करवाने के लिए थोड़ा संकोच कर रहे थे। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया वैसे इसके बारे में जानकारी और भी मिली और मुंबई में उनका ऐसा कहना है, मुंबई उन चुनिंदा शहरों में से है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी सिचुएशन के साथ सिचुएशन को हैंडल किया है। एक जंबो कोविड फैसिलिटी हुई और जगह जगह जंबो कोविड फैसिलिटीज बनाई गई उसके आधार पर, और कई जगहों पर सिर्फ ऑक्सीजन देने की सुविधाएं भी दी गई। और उनका ये कहना है कि मुंबई डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने ART घर घर तक पहुंचाने की पूरी तरह से व्यवस्था की और बहुत अच्छा काम किया। लेकिन दुर्भाग्यवश गुप्त रोग या STI के लिए सरकार ज्यादा कुछ समय नहीं कर पाई, सरकारी हॉस्पिटल कुछ कर नहीं पाए क्योंकि सारे के सारे OPDs बंद ही थे। तो उनका ऐसा कहना है कि वो शायद एक कमी रह गई, लेकिन कोविड को काफी अच्छी तरीके से ग्राउंड लेवल पर संभाला गया है। Thank you so much, Dr. Chitra. We'll come back to you. Now, I'd like to ask Ali about what has been the whole experience of Canadian High Commission in these last few months, how you have reached out to, people and how you are engaged with the issues that Canadian High Commission has always been engaging pertaining to the communities, especially LGBTQ community. Sure, thank you very much. When we think about the community during the time of COVID, it's so important to recognize the multiplicity of the vulnerability that occurs within the community. As it is, there's an economic marginalization, there's access issues, there's stigma, and then COVID exacerbated that, like our first speaker alluded to. So one of the best examples is actually I work with Humsafar Trust, where we were actually able to train up practitioners in the clinics before the clinics opened to ensure that they had the skills they needed, the equipment they needed. And ultimately, our job as the diplomatic community is to support your agendas in the sense that when you define what you need, you tell us, and our job really is to serve that sort of boost and booster purpose to support what the needs of the community are, especially in times of crisis. When it comes to COVID, I think a lot of the work that was done around the capacity building at that time was really part of a much larger, longer-term strategy in supporting against discrimination, in supporting the community's economic well-being. So, for example, we've been involved in working with various groups on career fairs, working on supporting capacity building when it comes to organizations being able to fundraise adequately for HIV and tuberculosis in the way of budget processing, financial management, also supporting young queer leaders, working with the Keshav Suri Foundation, for example, and economic support to make sure that people have an equal opportunity within the community through the Pride Circle and other job fairs and career fairs. Also social media campaigns, especially during COVID with Humsafar Trust,
talking about inclusion and the importance of not actually leaving people out. And I think, today in this conversation is testament to the fact that this still is an issue and needs to occur, that we continue to do this work. We've also are currently working on an set of inclusivity manuals. These manuals actually are helping hospital workers and frontline workers, essentially be better equipped to know how to be appropriately handling patients who may have HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, and other such ailments. And that's one whole area of work. The second area of work is using this idea of cultural diplomacy. When we look at the way to get to the masses of people, whether they are part of the community or not, ultimately we rely on innovative forms, which I think India is very used to and does extremely well. And that is using films, art, artists, music to get the messages across. And those messages, again, are around supporting people's rights, against discrimination and stigma, inclusivity, this, diversity being a strength and not a weakness. So we've supported many events like the Kashish Festival, Gulabi Mela, the Rainbow Literature Festival, Tarang. We've also done a lot of work trying to bring Canadian artists and work to India and vice versa. So for example, a film called Venus that was about an Indo-Canadian transgender person was featured online for free during the COVID period, again, to allow people to understand the experience that even is faced in Canada. This is not an India issue, it's a global issue. And I think the only way we can really face this is if we work together. And that's where the unity around the partners that we work with, CSOs, NGOs, the diplomatic community, matters a lot. And I think for us, around the Pride March in Mumbai earlier this year is where we came together and marched as a diplomatic entity, saying we're here together to support the community and, to be there and be part of the for example, having our booths available as the High Commission to say we're here to wanting to hire you as young people during career fairs. These are tangible things that we can do and need to continue doing, and especially during times of crisis, to make sure that our support for the most vulnerable is there so they don't know that they're not alone. And I think that's an international global responsibility that belongs to all of us as individuals, as countries, as governments, and as civil society. Thank you so much. That was really nice. मैं आपको बताना चाहूंगी कि अली ने बहुत अच्छी बात कही. उनका ऐसा कहना है कि जैसे कनाडा का जो दूतावास है, तो वो जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या जो एनजीओज हैं, उनका जो एजेंडा है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं. उन्होंने इस दौरान कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग, उसके बाद फिर करियर फेयर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनकी सबकी क्षमता बढ़ाने के लिए जो काम हुए हैं उसको उन्होंने काफी बढ़ावा दिया. और उन्होंने ये भी कहा कि हम सिर्फ एनजीओज के साथ ही एंगेज नहीं करते, बल्कि जो एक सांस्कृतिक मेलजोल के साथ जो काम करना होता है, जो कनाडा और भारत के बीच में, उस पे भी काम करते हैं. जो कम्युनिटी के मुद्दे हैं उसको लेकर सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ाते हैं. तो उन्होंने बात बताई कि जैसे हमसफर में जैसे गुलाबी मेला है या तरंग जो सिनेमा का फेस्टिवल है और जो लिटरेचर फेस्टिवल, इस तरह के सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उन्हें ये सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं. उन्होंने एक निःशुल्क फिल्म भी दिखाई, वीनस, और जिसमें ये भी बताया गया कि अगर कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति है और वो कनाडा में है तो भी उसकी भी वही समस्याएं हो सकती है जो शायद भारत के ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ हो सकती है. तो इस तरीके से जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, जो यहाँ के CSO का जो एजेंडा है उसको सशक्त करने में, मजबूत बनाने में हाई कमीशन ऑफ कनाडा हमारी इस तरीके से मदद करता है. सो थैंक यू अली, एंड आई विल नाउ गो टू कैरन. सो it's nice to have you here, Karen, as a strong supporter. जैसा कि आप जानते हैं कि मैक कॉस्मेटिक्स, मैक एड्स फाउंडेशन बहुत सालों से हमसफर ट्रस्ट को सपोर्ट कर रहा है, और सहयोग जो प्रोजेक्ट है वो मैक कॉस्मेटिक्स का ही प्रोजेक्ट था. So सहयोग project which was funded by Mac AIDS Foundation and through Mac Cosmetics, that has been one of the solid support that we have received. So Karen, how has it been as far as the work is concerned all these months, and how have your initiatives to support the community and the grants, how have they shaped up? Thanks, Alpana. So yeah, I mean, it's been a very
interesting and challenging time, as it has been for everyone, because in March, of course, all of our stores completely shut down and our business was essentially nil. So all of the funding that that comes into the MAC AIDS Fund actually comes from the sales in our stores. So that funding stream also had stopped, but because we had already a cash on hand that had been saved, what we did was we accelerated some grants to specific organizations. So those who hadn't received a grant recently, those donations were accelerated, and we allowed those organizations to include COVID relief into the scope of the grant. So whereas normally the grant is specifically related to HIV/AIDS related activities, such as what we're doing already with Humsafar, we allowed organizations to include specific COVID relief activities in the scope, and the grant could be used towards that. So at a global level, we accelerated grants worth $10 million. That includes India as well. And that's obviously enabled some organizations to really react really quickly to the change in demand from the communities that they work with, and help support as many people as possible during the pandemic. One of the other things as well that's happened for us is, of course, with all of our stores completely shut, we have an army of employees. And the first priority for us was the health, safety, and well-being of everyone who works with MAC and everyone who contributes to the fund, because without our people, we don't have any way in which we can support our community the way we have been doing for so many years. So the health, safety, and well-being of our employees was and has been and continues to be an absolute top priority. So, you know, when the stores were shut, we had multiple touch points and communications with all of our teams, just in general, ensuring that everyone's okay and everyone's doing fine. And even if you're not in a crisis situation, knowing that we're all one big family and making sure we keep in touch with everyone, it's been really, really important for us. And of course, as our stores have opened up again, we have absolute best-in-class standards in terms of hygiene, safety for our employees, and for our customers as well. So we have lots of guidelines in the store pertaining to how many people can be in the store, the kind of safety equipment our artists need. We have very stringent guidelines on how our products can be tested and trialed in stores. And we've really been particularly cautious, I would say. So, you know, it's not that we've just followed the norm of what every brand's been doing. We've taken external advice on what is the absolute safest way to let our employees come back to work and to let our customers come back into our stores, to make sure that nothing comes ahead of health and safety. And I think that's really helped us, you know, stay connected with our team to make sure that everybody can come back to work with full positivity, and to make sure that they can keep selling Viva Glam so that we can start to build up the fund again, because we have lost a few months of funding, and that will have an impact on the fund overall. But we're just super happy to have everybody back at work and motivated again to sell Viva Glam. राइट राइट, थैंक यू सो मच कैरन. आपको ये मैं बताना चाहूंगी जो कैरन ने बताया कि जैसे ये जो 7 महीने हैं सभी के लिए, जैसे ये एक दिलचस्प और चुनौती भरे महीने थे, वैसे इनके लिए भी थे. और उन्होंने बताया कि जैसे वीवा ग्लैम जो उनकी लिपस्टिक है, उसका 100% जो पैसा है वो एड्स फंड के लिए जाता है. तो आप मान सकते हैं कि इतने महीने से अगर स्टोर शुरू नहीं है और कुछ बिक्री नहीं हुई, तो उस फंड में भी थोड़ा फर्क पड़ा होगा. तो फर्क तो पड़ा, लेकिन उनके पास कुछ सेविंग्स थी जिसका उन्होंने उपयोग किया जो दूसरे प्रोजेक्ट्स है उसे बढ़ावा देने के लिए. उसमें अगर कोविड भी है तो कोविड भी उस विषय को ले सकते हैं एड्स फंड के साथ. और उन्होंने अपने ऑफिस के जो सारे सहकर्मी थे और जो उनके स्टोर के आर्टिस्ट थे उनके साथ कांटेक्ट बनाए रखा. जैसे गणेश ने बोला ना, हमने कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट बनाए रखा, वैसे मैक ने अपनी कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट बनाए रखा. और अब चूंकि उनके स्टोर खुल गए हैं तो पूरी तरह से जो जो सुरक्षा बरतनी चाहिए उसका पूरी तरह से वो अपने ग्राहकों की उस तरह से सेवा करने के लिए वो पूरी तरह से समर्पित हैं. तो अब एक इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सवाल सभी पैनलिस्ट से ये पूछना चाहूंगी, और मैं उसी ऑर्डर में जाऊंगी जिस ऑर्डर में मैंने शुरुआत की थी, कि आगे आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हमें, और ये सवाल मैं सभी से करूंगी लेकिन शुरुआत गणेश से करूंगी, दैट
आगे हम बढ़ते हुए किस तरीके से हम अपने आप को संभालेंगे, हमारे जो मुद्दे हैं HIV, ART या जो भी हमारा क्षेत्र है उसमें हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हाउ आर वी गोइंग फॉरवर्ड, हाउ आर वी गोइंग टू deal with the world that has slightly somewhat changed and we have our challenges. So Ganesh, over to you. थैंक यू। आई थिंक आगे के लिए हमें कम्युनिटी को साथ में लेके ही जाना चाहिए और एज ए पब्लिक हेल्थ अप्रोच डीलिंग विद ऑल एपिडेमिक पैंडेमिक, तो कम्युनिटी को इन फ्रंट रखना चाहिए ताकि मुद्दे फ्रंट वाइज आना चाहिए और सलूशन भी उनके पास ही रहता है। अगर मैं एज ए LGBT मुझे क्या मुद्दे हैं, अगर मैं फ्रंट लाइन में हूँ तो आई कैन शेयर माय व्यू। तो आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि पैंडेमिक कब ख़त्म होगा कब आएगा मालूम नहीं है। तो जिस तरह हमने लास्ट 8 मंथ में, जैसे सोहेल सर ने बताया कि हमने कभी चैरिटी वर्क इस तरह नहीं किया था, लेकिन हमने पैंडेमिक ने सिखाया चैरिटी कैसे करना है। तो इस तरह कम्युनिटी को इन फ्रंट रखना चाहिए। दैट इज माय मैसेज टू ऑल। एंड अनदर थिंग कि देखिए हमें हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो हिम्मत को कभी कम नहीं करना चाहिए। तो जो भी मैं अभी फिलहाल के सिचुएशन में मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी इश्यूज है, जॉब नहीं है, बहुत सारे जॉब जैसे सोहेल सर ने बताए थे जॉब नहीं है। तो आई थिंक इसके ऊपर भी एज अ डोनर, एज अ हेल्थ सिस्टम, एज अ गवर्नमेंट, सबको साथ में मिलके कम्युनिटी के साथ काम करनी चाहिए। either a ration kit or job, getting the job. So it's a very tough time for everyone. So thank you. राइट गणेश, मैं थोड़ा एक ये पूछना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे जो युवा पीढ़ी ये कार्यक्रम जो देख रही है और अगर वो उनका HIV का डायग्नोसिस पॉजिटिव आया है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्योंकि आप खुद भी एक विजेता हैं, मैं आपको विजेता मानती हूँ और आप हैं विजेता, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? देखिए मैं एज ए गणेश, मैंने जब मेरा टीनेजर मैंने नहीं देखा, तो मैं चाहता अभी के युवा पीढ़ी जो जेनरेशन जेड और एक्स है, स्पेशली जो यूथ है, तो उनके लिए कभी डरे नहीं। आपके लिए अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज है इंफॉर्मेशन के लिए और कम्युनिटी साथ में है। तो प्लीज आप डायग्नोस, अभी देखिए साइंस ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी आगे किया है, तो वो टेक्नोलॉजी को कभी आप पीछे ना हटे। और खास करके मैं इंडिया स्पेसिफिक बोलता हूँ कि हमारे पास डायग्नोस ट्रीटमेंट किस हेल्थ सिस्टम, गुड पब्लिक हेल्थ हमारे पास है और कम्युनिटी साथ में है। तो आप डरे क्यों? आइदर यू गो फॉर अ प्रिवेंशन और गो फॉर अ ट्रीटमेंट, क्योंकि जीना तो हमको है, चाहे प्रिवेंट करके जिए चाहे ट्रीटमेंट लेके जिए, जीना अपनी जिंदगी जीना है। तो प्लीज बिल्कुल ना डरे। और हमारे पास ट्रीटमेंट भी है और इंडिया में एक्ट भी है, लॉ है, तो HIV एक्ट है, वो भी है। तो आप बिल्कुल पीछे ना हटे। तो हम आपके साथ में हैं और आप हमारे साथ में हैं। तो इस तरह आप अपनी जिंदगी को कभी कंप्रोमाइज ना करें हेल्थ इशू को लेकर। तो आई वुड विश टू योर फ्यूचर, जिस तरह आज मैं एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन मैं मेरी मदर का केयर करता हूँ। इवन मैंने मेरे 20 ईयर्स एगो जब मुझे घर से बाहर किया था, आज वो ब्रदर्स को मैं सपोर्ट करता हूँ कोविड के सिचुएशन में। तो आई एम वेरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द HIV पॉजिटिव, सो आई हैव अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। सो दिस इज हाउ आप कोई भी डायग्नोस होते हैं तो प्लीज इंश्योर द ट्रीटमेंट, दैट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ट्रीटमेंट लेना, और किसी को भी मालूम होता है तो प्लीज आप स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन को भी आगे बढ़ के एक भाईचारा, एक लव, केयर, अपनापन, तो वो लेके आप साथ में चले। तो वायरस, बहुत सारे जर्म्स, फंगल, बहुत सारे बैक्टीरिया, ये दुनिया में बहुत सारी चीज है, माइक्रोब्स, तो लेकिन इंसान को साथ में इंसान ही लेके चलेगा। तो प्लीज दोनों हाथ, एक हाथ के ऊपर हाथ रख के आगे बढ़े
प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी है और जिंदगी आगे बढ़ेगी, कभी नहीं रुकेगी। थैंक यू। Thank you so much. That was so powerful. I'd like to ask सुहेल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक पूरा वो ऐसा काल देखा है जिसमें कुछ नहीं था, जिसमें बहुत सारे लोग गुम हो गए, खो गए क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं थी, और आज हम इस दौर पे खड़े हैं कि हमारे पास 2030 का टारगेट है कि एंड एड्स बाय 2030. So in this context, what message would you like to give to the community members? I think it is it's up to the community members to rise to the occasion. Okay, when COVID started, we realized that there was messages from the government agencies about prevention of COVID, and similarly 30 years ago we saw the same thing happening around HIV. But what we realized that during the times of COVID, nobody spoke about the LGBT community. Nobody spoke about how the transgenders are being affected. Nobody spoke about how trans men are being affected. Nobody talked about ART treatment, the unavailability of that, the the whole business of non-essential and non-essential, and there were a lot of ignorance and fear. So what I feel that the community should rise, and that's what we did as a NGO, as a CBO, that we started a project called Project Samaj, which was essentially guided towards the LGBT community, and the brain and the muscle behind that campaign is sitting amongst us, which is Kalpana herself. And she has done a lot of hard work towards that. She's leading the whole campaign, and we all are trying to support Project Samaj. So what Project Samaj, the objective is to reach out to the community, tell them about how to deal with their problems, besides talking about the basics like wear a mask, wash your hands, keep distance, maintain social distancing, etc. It talks about how to deal with despair, how to deal with mental health issues, how to gain access to health services. It's a massive campaign. It started on the 2nd of October and it will continue for the next few months. And we have made, it's a multimedia campaign. It's a multi-pronged effort through a series of posters, about 5 to 6 animated videos, a few live action videos. And it's all, if you see it on social media handles of Humsafar Trust. And I would at the same time like to thank UNAIDS, who came with us and associated with Humsafar in this project. And if you visit any of the social media handles, you'll be bombarded with messages. And it has today reached over nearly close to 4 lakh people within a month and a half, nearly 2 months actually, and I'm sure it will stay continue to stay on social media handles. You'll see some more communication and IC material being released. Some more films are awaited, and we'll try to make an impact and educate the community, empower the community, and tell them that where to gain health services from, how essential it is to take care of their mental health, how essential it is to come to terms with the situation, not live in despair, but to tell everybody that we are all in it together. Which brings us back to the World AIDS Day theme this year, that it is global solidarity and the year of shared responsibility. And as Ganesh very rightly said, that we have been facing stigma and discrimination throughout for many, many decades now. But the idea is to fight it out and keep your fight sustained and more effective. That reminds me, राहत इंदौरी नाम के बहुत मशहूर शायर रह चुके हैं, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है कोविड के चलते। वो कहते हैं कि आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़कर
कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। उम्मीद है हमारा सफर जारी रहेगा। शुक्रिया। Thank you so much. Thank you so much. What a beautiful couplet. Now over to Dr. Chitra. As a health professional who has seen generations of young people, you know, dealing with STIs, HIV, now COVID, what message would you like to give? आप हमारी युवा पीढ़ी को, ये कार्यक्रम देखने वाले सभी लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर? So what I would like to say to everybody now is that you know, I'm so happy that we in this country have reached a point where, you know, it's 377 is gone. It's not, you're not a criminal anymore. That's a big, but what I still find what really hurts is that, you know, open acceptance by families we don't see. That is something that really bothers me, because I just tell you a small story about one patient of mine, a 19-year-old boy, gay. He came, we diagnosed him to have secondary syphilis, and what he told us was he was abused by somebody who lives in the same society complex. And when I told him, you know, why don't you lodge a complaint, because it's a criminal act, and he said no, that it would not, you know, it would make my mother very unhappy, it would finish her. So I said, have you not come out to your mother? He says, my mother knows, but nobody, I mean, she doesn't want me to tell, be open about it, you know, in society, doesn't want everyone to know. And I don't know why families cannot accept their LGBTQ family members and be proud of them. And I think that's what is the next thing that's needed in our country, because even if you've decriminalized it at a societal level, there has to be acceptance, there has to be ownership of these individuals, because that's what I see in these young people is they still don't feel they belong, and they need to be made to feel they belong. That's one thing. And I mean, I'm very preachy when it comes to diet, and you know, and I find that there's such horrible dietary habits. So I just beg all the youngsters, you know, eat your healthy diets, please stay away from junk food and you know, substance abuse. You know, some people, they experiment but they manage to move away from it, but some people kind of get. But I also see that this sense of not belonging probably makes them feel depressed, makes them users. So I wish this whole thing would change, and you know, they could all my patients could live very happily. But what is very happening also is that I know there are a lot of physicians, doctors of my generation who still not comfortable with the LGBTQ patients. But with every year, with the younger and younger doctors that come in, because I teach in a medical college, so I interact with all of them, and I can tell you that at least 20-25 years, maybe not even 20, maybe 10-12 years from now, we are going to have doctors who are not really going to have any issues about their patients being LGBTQ, and that's something I feel very, very happy about. Thank you so much. It was a doctor who's also a mom talking, so I think I have to translate absolutely for our members. तो मैं ये हिंदी में अनुवाद करती हूँ. डॉक्टर चित्रा में मुझे आज एक माँ जो डॉक्टर है वो दिखी, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि आगे बढ़ते हुए हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है. सबसे ज्यादा जरूरी है कि समुदाय के सदस्यों को समाज का और परिवार का की स्वीकृति मिले. कानून ने 377 को डिक्रिमिनलाइज तो कर दिया है, लेकिन समाज का और परिवार का की स्वीकृति न मिलने की वजह से, उनकी मान्यता न मिलने की वजह से अभी भी कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिसके चलते कम्युनिटी रोगों का शिकार होती है लेकिन कह नहीं पाती हैं. उन्हें नहीं लगता कि वो कहीं पे बिलोंग करते हैं या उनके लिए कहीं उनके परिवारों में जगह है. उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक 19 साल के उनके पेशेंट का, जिसे सिफिलिस का सेकेंडरी या दूसरे स्तर का इन्फेक्शन था.
और उसने बताया कि उसके साथ जबरदस्ती हुई, पड़ोसी ने सेक्सुअल अब्यूज किया, और जब डॉक्टर चित्रा ने कहा कि आप उसके खिलाफ पुलिस में जा क्यों नहीं रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी माँ को बहुत बुरा लगेगा, मेरी माँ को मालूम है मैं कौन हूँ, लेकिन वो नहीं चाहेंगी कि ये बात सामने आए। तो उनका ऐसा कहना है कि हो सकता है कि समाज की स्वीकृति बढ़ेगी तो लोग खुलकर सामने आएंगे और उन्हें ऐसे हादसों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और एक उन्होंने सारे समुदाय के यंग सदस्यों से एक गुजारिश की है कि आप अपनी खाने पीने की आदतों को सुधारें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं और नशे के पदार्थों से दूर रहें। और वो जानती हैं कि उनके जनरेशन के कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो समुदाय के प्रति सेंसिटिव या संवेदनशील नहीं है, लेकिन उन्हें आने वाली पीढ़ी पर बहुत भरोसा है कि 10 या 15 साल में ये समस्याएं, क्योंकि नए डॉक्टर्स अब वो उनका सेंसिटाइजेशन हो चुका है, तो वो कह रही हैं कि शायद भविष्य काफी उज्जवल है, और अपना ख्याल रखें, ये उनका संदेशा है। So thank you so much, Dr. Chitra. That was really lovely. Now I'd like to ask Ali, going forward, what is the message would you like to give to the community, and any example that you would think that, you know, from Canada that we can adopt here or vice versa? Any inspirational message would you like to give to the young generation watching this program? Sure, thank you very much. I think, first of all, I do want to take the opportunity to thank Humsafar Trust for organizing this discussion today. I think even this is an important part of that, you know, the steps we have to take, that in times of crisis, when we're concerned with, you know, just basic survival and looking after ourselves against COVID, we can also forget that I think we've seen some fault lines everywhere in society across the world when it comes to the marginalized societies and who've been more affected as communities like the LGBTI community. So those populations cannot be left behind. We have a responsibility as a global community everywhere in the world to support those communities who need our support even more, because they actually are, you know, some facing further vulnerabilities. I think when I look at what can we do effectively, at the end of the day, it's what Ganesh said. It's people like Ganesh who are going to, you know, bring people with them and lead the charge on making the difference in India and around the world. No one else can do that. I think our role as the international community is very much to support people that are leaders and organizations and countries that could use our support. And it works both ways. We learn from each other, we grow from each other. And if I were to say something that we look at in Canada is taking a gendered lens to things, doing a gender-based analysis to all of our issues in the country, whether that's our budget, whether it's looking at infrastructure, whether it's looking at our health services. So taking a feminist approach is something that our government has done over the years, and something that we've learned a lot from, because when you take a different look at how things in society are affecting men and women, it's not just about women. Of course, women have you know, several instances in which they are further at risk, but at the same time, ultimately, it's also the relationship between men and women. And when we can address some of those gender issues, even when we look at the intersectionalities with the LGBTI community, when it comes to HIV/AIDS and other you know, diseases and ailments around the world, I think that is going to be a lens that will allow us to more effectively target and address people that need it the most. And I think as an international community, and I can't speak for everyone, but surely representing one entity within the diplomatic community within India, Nepal, and Bhutan, is that we all have a role to play, and we have to ask ourselves, what is that role in creating an equal, just, inclusive world that's free of stigma and discrimination, that regardless of who we are, where we come from, what we believe, what our orientation is, or frankly, what our preferences are, that we work together and unite to ultimately have the same rights and ultimately the same access, because we're human beings first. And I think if we can look at that global, holistic perspective and bring that to the table all the time, look at it from a feminist lens, I think we'll serve ourselves, our communities, our countries, and the world much better. Thank you so much. That was really so empowering. So अली ने ये बताया, उन्होंने सबसे पहले तो हमसफर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला इसलिए,
उन्होंने इस बात को वापस से दोहराया और इस पे जोर दिया कि ऐसी संकट के समय में और बाकी समय में जो सबसे कमजोर वर्ग होते हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस होते हैं, उनको साथ में आना और उनको आधार देना ये बहुत बहुत जरूरी है। और कनाडा से उन्होंने ये बताया कि कनाडा में हर जगह अब जेंडर बेस्ड एनालिसिस होता है, यानी कि किसी भी समस्या को, किसी भी मुद्दे को इस दृष्टि से देखा जाता है कि इसपे स्त्री पुरुष और जेंडर का क्या रोल है और उसे किस तरह से उस पे फोकस किया जाना चाहिए। वो बजट में भी शामिल होता है। उन्होंने कहा है कि जैसे LGBTQ और जो असमानता है उसको लेकर और एक समान समाज बनाने के लिए, कायम करने के लिए, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए हम सभी को साथ में आना है और भारत ही नहीं पूरे वैश्विक समुदाय को भी एक साथ आना है। तो इस पे उन्होंने जोर दिया। Thank you so much, Ali, for those powerful words. Now over to you, Karen. How do you see and what message would you give to young generation watching this program? What sense do we make out of this world, and how do we go forward with a lot of resolve and strength? Yeah, I mean, I think everyone's kind of touched on this a little bit, but the message for this year is definitely, as we've all been saying, shared responsibility is such an important point, whether it comes to COVID or anything else. And I think we have to really address the attitude that everyone has and what is everyone's level of responsibility. Whether you're someone who is, absolutely fit and well and financially stable, it is still your responsibility to take care of yourself so that you take care of everyone else. And I think COVID has definitely been a lesson for everyone in how the things that you do and the actions that you take can really affect anyone else. Something as simple as just going outside and interacting with people, it is now our responsibility to make sure that we look at the risk that we're kind of putting onto other people just by doing that. So I think it's more important than ever just to really band together and think about the shared responsibility you have for not just the people in your house, but the people in your community, the people that you interact with on a daily basis, or when you just travel out somewhere else. That message of social responsibility is really important. And I know Ali also touched on this, on diversity and inclusion. This is such a big, important topic for our organization, for MAC and for the Estee Lauder companies, is to really look at how can we grow the level of acceptance for everyone. So not just one specific community. How do we really have more understanding and acceptance about people, and that, it doesn't matter about our differences. It's important to acknowledge our differences and be proud of them and to accept people. And that a diverse workforce, in our case, really helps to build creativity and helps to actually increase productivity and makes us more relevant to the customers and the community that we serve. So I definitely think shared responsibility and making sure that we're advocates for inclusion and diversity is something that, not just the younger generation, I think it's an important message for everyone. Right. Thank you so much, Karen. And really, thank you so much, all the panelists, for being here. Don't go as yet because we are not yet done. There's some question and answers which can come. But there's one question which has been posed by a doctor, and I would direct that question to Dr. Chitra. How do you compare aftercare and support initiatives with programs run in the first world countries? Could you unmute? So compared with the first world countries, I think the scenario you can't really compare, because we are definitely overall in medical infrastructure far behind the first world countries. So we've of course handled it well with setting up these jumbo COVIDs and things. So we don't have a very well structured 3-tier healthcare structure like developed countries have. So there it's very, you have a primary level, then you have a first tier referral. So a tertiary hospital rarely sees, things like cold cough fever or some very basic kind of, but here we don't have that. So you will have a tertiary hospital OPD also full of very basic kind of complaints. So, but even then we still function.
we do deliver a decent level of healthcare service given all the shortcomings. And when it comes to COVID, I feel very proud that now all COVID centers, including the jumbo COVID centers, have started post-COVID OPDs and are also helping to look after, because there are so many problems cropping up, so many post-COVID kind of problems that patients are facing, whether it is mental health issues, whether it is neurological issues. So there are post-COVID OPDs, and these things are being, and it's like the response was instantaneous almost. You know, the moment it was realized that post-COVID syndrome is like there, and immediately the post-COVID OPDs were started. I think by September, we have seen the starting of post-COVID OPDs. So I think we've done pretty well, given everything. We've done pretty well on the COVID, handling the COVID problem. Yeah, thank you so much for that response. It really boosts our, morale so much about, suppose if one of us gets it, we know that there are caring and efficient doctors like you, Dr. Chitra, and thank you so much for your contribution in the whole, dealing with the pandemic. We have another question. The person has said that they love the work done by all of you, and I really appreciate your contribution of all of you all in helping the community. I also want to ask that how are we going to work on advocating about getting the people living with HIV placed in the right tier while accessing the strategy to distribute COVID vaccine doses, because I believe that the people living with HIV are more vulnerable to the COVID. So, Dr. Chitra? So yeah, I think I don't know the absolute details, but yes, there is, for example, they are preparing, lists of people who will qualify to get the vaccine first, and definitely the healthcare workers, frontline workers, and along with it, vulnerable in the community, for example, the elderly, the HIV, people, PLHIVs, etc. So there is a strategy kind of being formulated in terms of how the vaccination will be given. So of course, we have to still wait before there is complete clearance, because as you know, it is still under trial. So when the clearance is given to the vaccine, but the strategies are already being formulated, assuming that within a few months the vaccine will be ready, and then it will be given to vulnerable communities first, and then of course to the general population. Right. Thank you so much. There is a very nice, heartwarming message. I totally agree with Mr. Suhail. In this COVID situation, I couldn't really go to government hospital for my medicines, as I take care of my mom, who always looks up to me for help. But I was so touched when Sandeep and Santosh, who work for Humsafar, came all the way to my home and not only delivered the medicines on time, but also helped me with the ration kit. I'm thankful to them, and I'm so grateful to Humsafar for helping me and being there, risking their own lives. It is quite commendable what they did. Thank you, and God bless Humsafar and all those who help Humsafar to help me. Hello? 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 Can you all hear me? Yes. Can you all hear me? Yes, we can hear you. Can you all hear me? Yes, we can. Yes, Yeah. yes, Did we you hear can. the whole message that has come? Yes. Yeah, because my internet connection is unstable, so I got a, yeah. There's another message that says that also Ganesh's experience is quite inspiring. It really motivates me, and I'm sure your experience is helpful to lots of inexperienced people. Thanks, Ganesh. This is the response from one of the members. And yeah, and let me see if there is any other message. Yeah, that's about it. And I think lots of heartwarming. Yeah, there's one more question. Okay, let me see. This has already been taken, admin. I've already taken this. Ma'am has already answered this. Okay, question for Dr. Chitra. Just a moment. Yeah, just a moment. In the question and answer. Tinesh, I'm unable to source this. Can you unmute and read that for me, please? Okay, I can read it now.
question for Dr. Chitra. Dr. Chitra, can we foresee a functional cure in near future for HIV with lots of molecules in the pipeline? Once again, congratulations for the tremendous work done. Yes, I think we can look forward to kind of a functional cure, because everything, like right from receptor blockers, everything is being studied now, and I'm sure sooner or later something will come up. But all I want to say is that HIV is one thing. As an STI treating physician, I don't think our STIs are going to go away ever permanently. So I think I still also tell my patients, irrespective of what kind of cure or treatment for HIV, I think responsible behavior related to one's own health, related to one's sexual health, is something that we must all adopt. Every one of us, whether we are LGBTQ or as Vivekanand said, he doesn't hold grudges against the rest of the people who are straight. So whether you're straight or whether you're LGBTQ, you need to take responsibility for your health, for your sexual behavior. I think that is very important. Right. चित्रा ने बहुत अच्छा मैसेज बोला है. उन्होंने कहा है कि शायद हो सकता है भविष्य में कोई इलाज भी आए, लेकिन वो गुप्त रोगों का, वो यौन संसर्ग रोगों का इलाज करने वाली डॉक्टर होने के नाते आप सभी को ये कहना चाहती है कि किसी तरह के लक्षण आते हैं, कृपया जांच और इलाज कराएं. वो जिम्मेदारी हमारे हाथ में है. HIV का तो इलाज शायद निकल भी आएगा, लेकिन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये इसके लिए आपको स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी. There is another question for Dr. Chitra. How can we discourage youngsters from indulging in chemsex or hyphen sex where in needles are so commonly shared? Now, this is really serious question. How can we discourage youngsters from indulging in chemsex or hyphen के लिए जिसमें लोग needle share करते हैं, जिसमें HIV की संभावना बढ़ती है, उससे हम लोगों को किस तरह से discourage या हतोत्साहित कर सकते हैं? I just want to say that, this is a very complex question. And what I have seen from people's behavior in whatever, whether it's substance abuse, finally, you can do just so much, but it has to be self-motivated to do something or to not do something. There has to be, and I think there is a lot of thing about community, family also, which comes into the picture. There will always be an individual, however, there will be some individual, whether it's a DNA issue, whether it's a, mental health issue, we don't know. But by and large, we are going to see these problems. And I think, already we have started the ball rolling by giving sex education from a young age. So this kind of thing about being responsible in your behavior, I think that is going to play a great role in this. I mean, I don't know about any direct measure that I could do. For example, I used to have some colleagues who try and tell youngsters who come with a sexually transmitted infection. I mean, somebody who's a teenager, maybe 19, and, do you think you really should be in a sexual relationship or focusing on your career? And I think that is so inappropriate, because it isn't as if there is an age. I mean, but what is important is, even as a teenager, you need to be responsible, and we as the caregivers should be, as the community should make sure that our children learn from a young age to take responsibility for themselves. So I think that is, I'm not sure if that answered the question, but that's how I think. डॉक्टर चित्रा ने कहा है कि ये बहुत जरूरी है कि यंग एज से केमसेक्स का या सब्सटेंस यूज का भी कोई इशू है. और एक सवाल ये भी आया है कि लोगों को HIV से डर नहीं लगता है और यंगस्टर्स जो केयरलेस हो गए हैं. तो डॉक्टर चित्रा का कहना है कि हमारी शिक्षा में भी, हमारे एजुकेशन में भी शुरू से अपनी जिम्मेदारी आप अपने
कामों के लिए खुद जिम्मेदार हैं और आपको जिम्मेदारी से निर्णय लेने हैं, ये सिखाया जाना चाहिए। एक हम ये कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। और डॉक्टर चित्रा, 2 सवाल हैं। एक ने कहा है कि मुझे मेडिसिन के बारे में पूछना है और एक ने कहा है मुझे एआरटी के बारे में पूछना है। तो मैं इन ऑडियंस से ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको एआरटी के बारे में जानकारी चाहिए तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक हेल्पलाइन है 1097। 1097 एक हेल्पलाइन है। इस पे अगर आप फोन करेंगे, भारत की किसी भी भाषा में आपको जानकारी मिलेगी। और दूसरा ये है कि अगर आपको जांच करानी है और एआरटी चाहिए, या आपके पास ऑलरेडी एआरटी मेडिकेशन के लिए आपके पास ऑलरेडी कोई पेपर्स हैं, मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप गणेश से हमसफर ट्रस्ट में संपर्क कर सकते हैं। वो आपका पूरी तरह से मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा मुझे एडमिन ने बताया है कि एक ऑडियंस के एक सदस्य ने हाथ उठाया है। तो क्या आप उन्हें अनम्यूट करके उनका सवाल डॉक्टर चित्रा की तरफ कर सकते हैं? Rupam, you are unmuted. You can ask your question. Ma'am, I think we can go to the next question. ओके। एक यहाँ पे इन्होंने अपना अनुभव बताया है कि उनको ऑटो रिक्शा मिल नहीं रहा था और सेंटर में जा नहीं पा रहे थे, लेकिन हमसफर ट्रस्ट से किसी ने मदद की। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप बंद थे, वो खुद की गाड़ी नहीं चला पाए। सो समवन हेल्प देम रीच द एआरटी सेंटर एंड help ART Center, and he would like to thank Anil Ukarande for being able to reach the ART Center by organizing an auto rickshaw. These are amazing stories. Thank you so much, each and every one of Humsafar Trust family members. And okay, with this we close the question answer session. Panelists, please stand by for the movie. Tenish, are you ready for the movie? रुको और सोचो, रुको सोचो. Dinesh, over to you for the movie. I think there's still no sound, Albana. So we shall go with this because it will be available on the channel. Sure. Ma'am said continue. Yes, continue.
कसले सायलेंट जाव केला हांवें तुवें फोन सायलेंट केला हांवें ना न्हय Okay, so it was, we are sorry that there was some sound problem, but this movie will be available on Humsafar Trust YouTube channel. Humsafar Trust की YouTube channel पे ये movie रहेगी. इसमें बहुत सारे messages, सारे myths and misconceptions ये address किए गए हैं. और ये जो मेन किरदार है उसका नाम है मालिनी दीदी. So मालिनी दीदी से मिलना ना भूलें on our YouTube channel. And with this, we bring this evening to close. And thank you so much for all the panelists, Dr. Chitra, Karen, Ali, Ganesh, Suhail. Thank you so much for being there. And stay home, stay safe. जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं और कॉन्डोम हमेशा इस्तेमाल कीजिए. Bye bye. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you so much, all of you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you very much. Thanks. Thank you. Thanks, everyone. And I really apologize for that technical error. चलो कोई बात नहीं. When we yesterday checked it, it was all fine. I mean, it was running all well. Sound was there.
but I don't know what happened today. So I'm really sorry, but we can see that film on HST YouTube. Immediately upload it on YouTube channel, no issue. Yes. Yep. Thank you so much, everyone.